ओके देखो स्लैब एंड द मिरर कंबाइंड में एक दो क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा। तो डिफरेंस क्या है अभी तक? बिफोर द ऑपोजिट में है ऑब्जेक्ट एंड द आई और ऑपोजिट, ये वाला एडवांस में आएगा, मेंस में नहीं आएगा, बट I will keep one question, then you understand. Okay. Now draw the diagram for this one. A 20 mm thick slab of glass of refractive index 1.5. Okay. So एक slab है, thickness कितना है? The given thickness is 20 centimeters. इसका refractive index is 1.5. Okay. He is placed in front of a plane mirror. Okay. Plane mirror है. ये स्लैब है, ओके, अब थिकनेस कितना है? 20 सेंटीमीटर टी। ओके, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज relative to mirror as seen by the observer through a glass slab when a point object is kept in a distance of 40 centimeters from the mirror. So mirror से 40 centimeters दूर में इधर ऑब्जेक्ट है, 40 centimeters. Now he is seeing when the point object is in a distance. Okay, find the position of the image related to mirror as seen by the observer through a glass slab. Through a glass slab से देख रहे हैं, मतलब here somewhere here जैसे ऐसे देख रहे हैं, ये डायरेक्टली दे सकते हैं, डायरेक्टली is not seeing, he is seeing through the slab and the mirror. मिरर का फाइनल इमेज चाहिए मुझे, किधर किधर ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट सी आप देखो, मिरर इज देयर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, आई एम नॉट सीइंग ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, आई एम सीइंग द इमेज ऑफ द, एक मिरर है तो मिरर में देख रहा हूँ इसका इमेज ऐसा. नाउ द रे विल बी पासिंग थ्रू द स्लैब, जाएगा स्लैब में जाएगा, शिफ्ट होगा, राइट, व्हेनेवर द रे इज पासिंग थ्रू द स्लैब शिफ्ट होगा, शिफ्ट होने के बाद नाउ इट इज पासिंग थ्रू द प्लेन मिरर, राइट, शिफ्ट होने के बाद समवेयर इधर और इधर होगा ना ऑब्जेक्ट, दिस एक्टिंग लाइक वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस वन, एंड सॉल्व करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप करो. ओके, सो फर्स्ट टू टेल मी रे किधर से आएगा, ऑब्जेक्ट से, रे विल बी कमिंग लाइक दिस, रे डायग्राम के थ्रू लिटिल बिट लर्न करेंगे. रे इज कमिंग लाइक दिस, ये बेंड होगा ना, इट इज पासिंग थ्रू रे टू डेंसर, इट बेंड्स, क्या होगा, इट बेंड्स अवे ना टुवर्ड्स सटल में, ठीक है, तब बेंड होगा, बाद में और भी बेंड हो जाएगा इधर, and finally if you extract it will be coming like this. Okay, I dash. Okay, that means आपको पहले रे इधर से आ रहा है ना, बेंडिंग फिनोमेना will happen, refraction will happen, I am reaching to the mirror, right, बेंडिंग हुआ ना, शिफ्ट होगा ना, स्लैब रे इज पासिंग थ्रू, शिफ्ट फाइंड करो, पहले डेल्टा फाइंड करो by using the formula, because इस तरफ भी ये है, इस तरफ भी ये है, ये separated by distance 20/3, 20/3. So formula क्या है, t into 1 minus 1 by mu. इसको ना सॉल्व फर्स्ट. तो I don't know, object ray is है ना, इस direction you take as positive, right? So delta is positive, right? Delta how much you got? 20/3. 20/3. मतलब since you got positive, incident ray का direction में shift होगा, right? That means that's why I say shift होगा. Incident ray का direction only it is shifted. So delta that is equal to 20/3. बाद में 20/3 लास्ट में रखेंगे delta. Now ये mirror को कैसे दिख रहा है? It is coming from this ray, right? From this ray, the ray is coming बोल के दिख रहा है ना उसको. Is acting like virtual object for this one. Okay. वर्चुअल ऑब्जेक्ट कितना है, कितना डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट, देखो इन टर्म्स ऑफ डेल्टा लास्ट में करेंगे 20/3, इधर से तक डिस्टेंस कितना होगा, फ्रॉम हियर टू हियर 40, एंड इधर से तक डेल्टा, दिस विल बी 40 माइनस डेल्टा, राइट. नाउ वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसे देख रहे हैं, नाउ इमेज किधर फॉर्म होगा, द प्लेन मिरर, राइट, distance of object from the mirror is equal to distance of image from the mirror. So कितना है आपको
इधर फॉर्म होगा I called as I double dash. The distance of object from mirror. कितना that is 40 minus delta. पास में डेल्टा वैल्यू सकते हैं. ओके, बट रे इधर तक नहीं जाएगा, इधर इधर तक स्टॉप नहीं हो रहा ना. इट विल कंटिन्यू. द स्लैब इज नॉट अ ऐसा ऐसा इट विल कंटिन्यू. यू आर सीइंग समवेयर ऑर्डर, ऐसा नहीं इधर किधर भी देख सकता है. ओके, अब नाउ क्या होगा, मुझे आंख में जाने का, राइट. फाइनली यू हैव टू गो टू द आंख, राइट. सो नाउ किधर जाएगा टेल में, रे ऐसे जाएगा, बेंड होगा, अगेन बेंड होगा. Finally it is appearing. Finally if I extend the refracted ray, it is here I triple dash. This only we are seeing this one, right. Finally we are seeing this one I dash. Now कितना होगा, again it is coming to the shift, right. ये shift से और shift और see इधर तक जाने के बाद क्या होगा, it is appearing to meet from where, इधर गया, इधर तक समझ में, I double dash तक समझ. मतलब हाँ, now shift find करो, now second time shift find करो, 2 times shift find करने की, because the ray is now entering again to slab, right. फाइंड करो कितना होगा, अगेन सेम शिफ्ट डेल्टा इज इक्वल टू t into 1 minus 1 by mu यूज करो एंड फाइंड सेकंड टाइम शिफ्ट. मिरर इमेज एक्ट होने के बाद नाउ दिस इज एक्टिंग लाइक वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस आल्सो, राइट, फॉर दिस स्लैब. नाउ इधर से रे आ रहा है एंड गोइंग, एंड इफ आई एक्सटेंड एंड गॉट दिस वन, देयर इज अ शिफ्ट इज हैपनिंग अगेन. द शिफ्ट इज हाउ मच, अगेन दैट शिफ्ट फाइंड करने कितना हो रहा है, डेल्टा 1 मानो, डेल्टा 2 कितना है, फॉर्म सेम, t into 1 minus 1 by mu, thickness same, refractiveness same, everything same, right. So कितना होगा 20/3 only, right. मतलब in the direction of incident ray only shifting, right. Now tell me what is the distance from mirror to the image. Tell me, mirror to the this final image is a distance how much? Mirror to the final image distance how much? From here to here is 40 minus delta. A delta है. So this will be I double 40 minus 2 delta. Now subtract करो, delta subtract करो 20/3 and get them. 80/3. 80/3 का. देखो ये अंडरस्टैंड करो, अभी तक क्या है, ऑब्जेक्ट इज नॉट इन द सेम प्लेस ऑफ द आई, ऑपोजिट था, दैट्स व्हाई वी डन डायरेक्टली वन शिफ्ट. बट अभी पहले रे इधर गया, इधर से शिफ्ट, इधर से गया ना, शिफ्ट होगा डेफिनेटली, स्लैब से पास से शिफ्ट होगा, मतलब डेफिनेटली शिफ्ट वी फाउंड वी गॉट 20/3, राइट. फर्स्ट शिफ्ट हुआ, बाद में क्या हुआ, द रे वुड हैव रिफ्लेक्टेड रे है ना, सो इफ एक्सटेंड इधर है, this is acting like virtual object for this one. I told distance of the image from the object from the mirror is equal distance of image from the mirror. I double dash आया, ठीक है, इधर तक आ गया, बट इधर स्टॉप नहीं होना, अगेन जाके रिफ्लेक्ट होके फाइनल रिफ्लेक्टेड रे is appearing finally here. We are seeing the object through glass slab, right, and mirror, right. We find here this is a new thing. That's why we are trying to find two shifts. Okay, थोड़ा आपको तकलीफ, बट ये मेंस पे नहीं आएगा, आपको एडवांस में आएगा. ओके, ठीक है. वन मोर एक क्वेश्चन करेंगे, इंस्टेड ऑफ प्लेन मिरर विल टेक कॉन्केव मिरर. नोट ट्राई करें, तो ट्राई करो. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, स्लैब का थिकनेस है 6 centimeters and distance of object from the concave mirror is 32 meters and x they given as 6 find the position of final image when distance x shown is 5 centimeters. Oh, this is 5 centimeters. So 5 centimeters. Final image है. Okay. Step by step करो. Final ray will be coming from here, right? जाएगा रे. हाँ. स्लैब से पास होगा डेफिनेटली. स्लैब से will pass. ऐसा ऐसा करके. Appearing to pass through here.
Right, O dash. Tell me, there is shift, definitely there is shift, right? Shift कितना है? Delta find करो. I guess shift delta is equal to T into 1 minus 1 by mu. 2 centimeters. 2 centimeters. So pause जो है ना, that means in the direction of the incident ray only we got 2 centimeters. Okay. Now इस mirror को it is thinking that it is coming from O dash, right? इस mirror को देख रहे थे it is coming from O dash. Now this is acting like virtual object for this one. Now image find करो, V find करो by using UF by U minus F. Now focal length minus 15. Minus 15. minus 15, huh? Very good, nice. So F is minus 10 centimeters. Now U is how much? U is इधर से इधर तक है ना? So distance कितना है? Separate 2. So कितना? Minus 30 centimeters. And find V. V is equal to UF by U minus F. किधर है? 5 and somewhere here. ऐसा आएगा ना? I dash 1. Okay. ये let's go. Okay, ठीक है. इधर तक आया ना? Now I dash came as minus 15. From where? From mirror, this mirror, right? I dash. So from here to here, 15 minutes. Okay. Now जाके टकरा है ना? I तो I के पास आने का ना, then only we can see the image, right? Again it's coming back. Now in the same path में ऐसा आ रहा है. मतलब second time shift होगा, slab से pass हो रहा है ना? Now find delta again. Now this is the incident ray. Now this is the incident ray. This direction में positive. Shift will be same, right? 2 only, plus 2 or minus 2? Plus 2, right? Plus 2 means in the direction of incident ray is shifted from here to here. Now tell me what is the final mirror से कितना final image from mirror find करो कितना from mirror I want. From mirror I want to find the total distance. कितना 17 centimeters. Okay. ये कब करने का? When the object and I is in the same direction, same place में, and you are seeing through the slab and mirrors में, then only shift आपको 2 बार करना पड़ेगा. That's it. ये थोड़ा आप लोग समझ में आ गया तो अच्छा है ना, इसलिए this is an advanced concept. I thought to remove this one, but ठीक है देखेंगे, ट्राई करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे बोलते हैं. Understood that. ठीक है. तो देखो, suppose मान लो if I use composite slabs, here 1, 2, 3 slabs, आपको find the net shift find करने. Whether shift depends on object distance, formula में T into 1 minus 1 by mu only, refractive index पर depend हो रहा है. So it does not depend, आप दूर रखो कम रखो किधर भी depend नहीं होगा. So simply addition of all the shifts करने का with sign conventions. This direction पर take as positive. But ये पूरा करेगा उधर मिस्टेक करेगा भाई, तो मिस्टेक क्यों करेगा उधर? एग्जाम का टेंशन होगा थोड़ा. No, side silly mistakes in that. Plus minus 7.
प्लस माइनस वन लाइफ से चेंज होएगा, 2 साल में एक बार देखने वाला है अभी फिर से। एंड यू नो ऑलवेज आई ऑब्जर्व स्टार्टिंग में अटेम्प्ट में कितना मार्क्स आएगा, फाइनल सेकंड अटेम्प्ट ऑफ सेम भाई, बिकॉज बीच में आपको आईपी एग्जाम्स आएगा एंड डेट्स आ गया आईपी एग्जाम्स का, नॉट के राइट। सो एपी तो फरवरी में टेलिंग, फरवरी में गिवन आल्सो डेट्स आल्सो, फरवरी 18 19 से स्टार्ट हो रहा है एपी को। तेलंगाना में भी पता नहीं, फरवरी में मोस्ट ऑफ द पीपल आर ट्राइंग टू कीप, बिकॉज मार्च को लेके आए तो क्या हो रहा है, अप्रैल रन का प्रॉब्लम हो रहा है, ये यू नो जेई मेंस का थोड़ा डिफरेंट प्रॉब्लम ओके, दे आर कीपिंग द you know February only maybe, okay, so try to read in February में that IP का, okay। पढ़ा अभी तक, आईपी पढ़ा अभी तक? नो नो, कुछ नहीं, 8 मार्क्स का 2 चैप्टर में आएगा, 4 क्वेश्चंस आएगा, इजी, ओके। चल नाउ लैटरल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट एप्लीकेशन है पूरा ग्लास स्लैब का एंड रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ का भी डन, एंड नेक्स्ट वन इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट और लैटरल शिफ्ट बोलते हैं। जैसे भी फॉर्मूला आएगा, एक बड़ा फॉर्मूला वेट लर्न, लैटरल डिस्प्लेसमेंट 10th क्लास में भी डन पूरा। देखो दिस इज अ ग्लास स्लैब, ओके, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू, ओके। सो स्लैब है, थिकनेस टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू, आई एम इंसिडेंटिंग ए लाइट लाइक दिस and this is normal। so क्या होगा, the ray of light is entering from rarer to denser, it bends towards someone, right, it bends towards someone. This is R, again draw normal, and now denser to rarer, it bends away from R, and this also R है, and this is E, is called angle of emergence, and this ray which is coming out is called emergent ray, emergent ray. If there is no slab, the ray would have gone straight. The ray would have gone straight. Because of slab, it got shifted, right? And this shift is nothing but lateral displacement. This shift is called as lateral displacement. We represent as X. Lateral displacement. Our intention is to find X only. Now first find the relation between I and E. Okay, I and E का relationship लेके आओ. First apply Snell's law here, one equation. Snell's law here, one equation, and comparison से you try to get the relation between I and E. चलो. Sin I equals sin E. So I equal to E. देखो फर्स्ट क्या है, ये है ना, ये so mu1 into sin I is equal to mu2 is mu into sin R. फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड सरफेस का देखेंगे, mu into sin R, mu into sin R is equal to रिफ्लेक्टेड का 1 into sin E. If you compare this and this are equal, therefore sin I is equal to sin E. Therefore, I is equal to E. First of all, what's your understand? Angle of incidence is always equal to angle of emergence in this glass slab. Okay. Now our intention is to find X. तो उसके लिए ट्रायंगल्स बनाने का, देखो नॉर्मल को एक्सटेंड करूंगा नीचे 90 डिग्री पर, आई कॉल दिस एज A, B, एंड देखो ये X है ना, इस आई एम ड्राइंग दिस आल्सो X on it, so this is perpendicular distance, this is X only. Our intention is to find it. Our intention is to find this one, S plus C and this is T. Okay. Now two triangles we are taking, and our intention is to find X. Okay. Take right angle triangle A B C.
tell me what is cos r? Cos r. Adjacent by hypotenuse. Adjacent is nothing but t only. T by hypotenuse is AC. So therefore, AC is equal to T by cos r. Now, this is I, right? This is R. This total is I. This angle is how much? I minus R. देखो, normal and this angle. So normal and this angle. This line is called as I, and the remaining angle will be I minus R. What is sin I minus R in the triangle? I'm taking A, right angle triangle. I'm taking A, B, C. What is sin R? Sin I minus R. Sin I minus R. I minus R. Tell me. Opposite by hypotenuse. So that is x by AC. AC के जगह पे you know already T by cos r. So therefore x का फॉर्मूला है T into sin I minus R by cos r. This is the formula of that. T into sin I minus R by cos R is the formula for lateral displacement. But इसमें प्रॉब्लम क्या है? Angle R should be known. Sometimes question में angle I only will be given, R will be not given. Then also you will tell to find lateral displacement. उसके लिए generally आपको expand करके थोड़ा trigonometry use करके will get the formula that I will write the formula directly. वो भी बैठ करना पड़ेगा. Is both the same formula only. X is equal to देखो T sin I into 1 minus cos I by under root mu square minus sin square. This is formula that will back. In terms of I, ये दोनों फॉर्मूला शीट में मैं डाल दिया. फॉर्मूला बैठ करो. T into sin I minus R by cos R. Same T into sin I. 1 minus ऊपर cos आएगा, नीचे तो sin देखो ऊपर ये वाला दोनों sin ही आएगा. अंदर mu square minus sin square. And mu is the refractive index of the slab, glass slab. So T into sin I minus R by cos R is the formula. Lateral displacement. Okay. If you see carefully, the lateral displacement depends on what? Whether it depends on thickness of the slab, angle of incidence पर depend हो रहा है, and refractive index पर भी depend हो रहा है, right? तो लिखो. In the glass, it depends on thickness of slab, refractive index, and angle of incidence. Okay. No problem. Find the lateral shift. मतलब X is telling to find. He has given angle of incidence, angle of refraction also given. Thickness is given, and
refractive index of the glass slab is given. Refractive is given. No refractive index because I and R there is no refractive index, right? Formula में I use करो. X is simplified. What is the formula? T into sine I minus R by cos R. Okay, answer. 3√3. No. It is thickness. Sine I minus R is sine that is 1/2, right? नीचे cos R. करो सब करो. T into sine I minus R by cos R. So 3. 3. Perfect. 3 answer. आया? नीचे क्या है? Now देखो, I want the maximum lateral displacement which is possible for a glass slab of thickness T and refractive index K. Maximum lateral displacement कितना हो सकती है? It depends on the angle of incidence, right? Angle of incidence को change करने से lateral displacement होता जाएगा. Maximum कितना हो सकती है? So we know the formula x equal to, tell me in terms of I में in between, in terms of only angle of incidence, T sin I into 1 minus cos I by under root mu square minus sin square, right? Now देखो, I want maximum lateral displacement, right? Maximum x value चाहिए. X maximum होने के लिए, tell me sin I should be maximum or minimum. Sin I should be maximum, then only x is maximum. And cos I should be, ये 1 minus है ना, 1 minus वाला a minimum running, then only we get maximum. And दोनों condition वाला satisfy वाला I value will be 90 degrees. If I substitute 90 in this, cos 90 0 है, पूरा 0 हो जाएगा, sin 90 is 1. So therefore x equal to t. Thickness of the slab कितना होगा, उतना ही lateral displacement maximum हो सकते हैं. Any angle of incidence, मतलब इससे ज्यादा नहीं है. Angle of incidence 90 degrees में maximum possible है. Thickness of the slab. So maximum lateral displacement is equal to thickness of the slab. A bits में वगैरह में पूछेगा. At what angle में means angle is 90. So 3 applications done. 3 applications done. आपको नेक्स्ट क्रिटिकल एंगल वगैरह जाना पड़ेगा, देन प्रिज्म करके, देन लेंसेस यार. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट 2 क्लासेस हो जाएगा. चल, तो विल गो फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वगैरह में जाना है. Critical angle, total internal reflection. Tell me what do you know about critical angle? What do you think of critical angle? Follow me, this is easy topic. बोल सकते हैं critical angle बोलता नहीं बोलो. हाँ, The angle after which reflection starts occurring instead of refraction. reflection is occurring now. I mean, at 90 degree or at the critical angle, it'll start reflecting instead of refracting, even though the mediums are different. सब बोल रहे reflecting, refracting ये सब कुछ बोल रहे. All will come बोल के. हाँ, आप बोल सकते हैं topics? So it's mainly 3 principles: reflecting and refraction. Refraction happens inside the glass, inside the object. नहीं.
अभी बोल समथिंग प्रतीक, कुछ तो बोलेगा ना. So the light passes through something and doesn't pass the other side. Let's call refraction. तो क्या हो? Uh, Critical angle. it reflects inside the object or something. नहीं, आप टोटल रिफ्लेक्शन सब लोग बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल पूछ रहा हूँ. क्रिटिकल एंगल क्या है देखेंगे. चलो, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल रिफ्लेक्शन क्या है देखो. सपोज मान लो you have two mediums, one is denser medium and this is rare medium. Okay, I am taking the four cases. In normal I am drawing. Light I am passing from denser to rarer. Okay, I am passing denser to rarer. So क्या होगा? It will bend away from normal. It will not go straight, bend away from normal. This is angle of refraction. I increase the angle of incidence. Still it bends away from normal. Right? Still is bending. मैं ऐसा करते 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 एक पर्टिकुलर एंगल में I found angle of refraction is becoming 90 degrees. Angle of refraction is becoming 90 degrees. And that angle where the angle of refraction is becoming 90 degrees is called as critical angle. The critical angle at which angle of refraction is becoming 90. And इसको क्या बोलते हैं, मतलब पॉस्ट लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? ग्रेजिंग एमर्जेंस. ग्रेजिंग एमर्जेंस. ग्रेज में ग्रेजिंग एमर्जेंस होगा. एक क्रिटिकल एंगल में वैसा होगा. ओके, इफ आई इंक्रीज मोर देन क्रिटिकल एंगल, I is greater than C, and क्या होगा? रिफ्लेक्शन स्टॉप हो जाएगा. It will do reflection only. And angle of incidence is equal to angle of reflection. Is not doing refraction now. Okay, and this principle we call as TIR, total internal reflection. Total internal reflection. Okay, this is the one you have to understand. Now understood critical angle में क्या होगा? Angle of refraction will become 90. And उससे ज्यादा अगर मैं angle of incidence करूंगा, it will enter into total internal reflection. मतलब इधर TIR होने के लिए दो कंडीशन should be satisfied. What are two conditions? One is the light enters from denser to rarer compulsory, and second one is it should be greater than critical angle. Right? Yeah. Like conditions, light should be incident from denser to rarer compulsory, and I should be greater than C. Okay. Now here you have to understand. Not go click on. ये बहुत कम आने वाला है. If I is less than C, क्या होगा? Incident angle is less than C, refraction will take place. If I is equal to C, क्या होगा? Grazing emergence. Grazing emergence. That means angle R is becoming 90 degrees. And if I is greater than C, TIR will happen. Total internal reflection will happen. Okay. Now critical angle का formula will calculate. Critical angle का formula क्या है? Okay. याद है किसी को formula? Tensor, mu2, mu1.
So light is entering at critical angle, right? So क्या होगा? Grazing energy. Angle of refraction is becoming 90 degrees. Okay, इसका refraction is mu1 मान लो, refraction is mu2 मान लो. Okay, now sin, apply the Snell's law from here to here. Snell's law from here to here. तो क्या होगा? Incident ray का refractive index कितना है? mu2 into sin c is equal to refracted का mu1 into sin r. Sin r is how much? 90 degrees. So sin 90 is 1. Sin c का फॉर्मूला है mu1 by mu2. आपको कैसे रिमेम्बर करने का? mu1 is छोटा refractive index by बड़ा refractive index. Always, whenever two mediums are given, छोटा refractive index by बड़ा refractive index is always sin c. Okay. Suppose मान लो if the other medium is air and its refractive index of the medium in this bottom medium is denser medium is mu, then क्या होगा रेल में? What will be the sin c का फॉर्मूला? क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला. छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा है? एयर है ना, 1 ना, 1 by बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज mu. So sin c is 1 by mu बोल के whenever air and glass interface वगैरह पूछे तो it is 1 by c. Okay. अगर दूसरा मीडियम में एंटर हो तो छोटा by बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ऑलवेज रिमेंबर छोटा by बड़ा, सिंपल. एयर है तो 1 आएगा. Okay, now sin का फॉर्मूला यूज करके critical angle का फॉर्मूला यूज करके we have to do. Since we got in refractive index, they combined with the speed of light का. वो याद है? Refractive index of second medium, which is first medium, is equal to mu2 by mu1 is equal to c by v is equal to v1 by v2, and that is equal to lambda 1 by lambda 2. याद है? Absolute, relative and wavelength का direct relation है. चलो, now question करो. Sin c का फॉर्मूला आ गया ना? छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स by बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. Find the critical angle. C value is asking for a material having refractive index. Whenever one material only is asking, that means indirectly with respect to air only. 1 by, Huh? 1 by root 2. नहीं, angle चाहिए. Critical angle कितना? 45. Sin c 45 degrees. Okay. Sin c is equal to 1 by root 2. C is equal to sin inverse from the root 2, which is nothing but 45 degrees. Okay. Okay. Calculate the speed of light in the medium whose refractive index is 30 degrees. Whose critical angle is 30. C value they are right. Now he's combining with the speed of light of the medium. So since critical angle is given, from there you can find refractive index, and refractive index is speed of light medium we can find. 1.5 into 10 power 8. Yes, perfect. 1.5. Yes. आ गया सर? Sin c is equal to 1 by mu यूज करो, mu फाइंड करो, and that mu is equal to c by v. v फाइंड करेंगे. c वैल्यू मालूम है, v वैल्यू मालूम है, then v वैल्यू कैन फाइंड. आया? Calculate the critical angle of glass air interface if the ray of light incident on the glass surface. So the ray is a glass surface, it is incident on the glass surface. Now this is air, this is glass. Okay, glass surface is deviated through 15 degrees when the angle of incidence is 45 degrees. So 45 degrees. So क्या होगा? First of all, ray to denser bends towards someone. He has not given refracted angle. He has given deviation is given. If there is no glass, it would have gone straight. The deviation they given is 15 degrees. Now it's going to find critical angle of this glass air interface. C value.
refraction is not given. Mu. $45 degrees. Since we know the sin C का फॉर्म में क्या critical angle आती sin C is equal to 1 छोटा refractive index में बड़ा refractive index 1 by mu. मतलब अगर मुझे mu आ गया then colors we can find speed. Use Snell's law from here to here and try to find mu. 1 into sin 45 is equal to mu into sin R. R कैसा आएगा? Total is 45. This angle will be how much? 30. So sin that. So 1 by root 2 is equal to mu by 2. So mu is equal to root 2. Right. So substitute here sin C is equal to 1 by root 2 and critical angle is 45. And glass generally critical angle is 45. Okay. So whenever interface में इस तरफ 2 parameters इस तरफ 1 parameter अगर मालूम हो तो we can apply Snell's law to get other parameter. Okay. If the refractive index of the glass एक पूरा glass है उसका refractive index they given how much? Root. So refractive index is root. And if the refractive index of the liquid find the refractive index of the liquid mu L ये पूरा liquid में लगा है glass पूरा mu L चाहिए. If the ray strikes normal to the prism मतलब they given the ray diagram also the ray strikes normal to the prism 90 degrees. You know whenever you insert normally it will not refract, it will go straight. And they given the rays grazing emergence हो रहा है. Grazing emergence they given diagram है. मतलब normal से is 90 degrees. Right? Now इसका refraction is given. इसका angle of incidence find कर सकते हैं? Tell me. Use mass and apply. And इसका outside refraction index is mu L. No, find mu L. 1 by root 2. कितना? 1 by root 2. No. Angle of incidence कितना है? 30 degrees. No, 60 degrees. Because this is 90. This is 60. So this is 30. This is not angle of incidence, right? Angle between incident ray and normal. So this is 60. No, apply Snell's law from here. Root 3 by 2. Root 3 by root 2. Yeah. कितना? mu L how much you got? Root 3 by root 2. Yes, root 3 by root 2. आया आपको? Yes. Snell's law apply करने का उसका. इसका refractive index into sin 60 is equal to mu L into sin 90. Okay, we'll get the value of mu L. No, I'll get options right.
thing, find the angle of refraction you want in the medium. If the light is incident in vacuum or the air it is incident, making an angle equal to twice the critical angle. So, पहले critical angle find किया तो then only will get angle of incidence. Then you can find angle of refraction. Sin inverse root 3/4. देखेंगे. The question answer. This is I is equal to 2c given. Angle of refraction asking. And this is air equal and medium is 2. So find critical angle first, then only I can find the angle of incidence, right? So critical angle का formula we know already. Total refractive index by bada refractive index. So C is equal to 30 degrees. If C is 30, I equal to 60. Now use Snell's law to find R. Find the. So option D. Yes. D. 1 into sin 60 is equal to 2 into sin R. So sin 60 is root 3/2. So 3/4. So R is equal to sin inverse root 3/2. Yeah. So this application also done. But some more questions करेंगे. Then only critical. Majorly these questions will be coming in exams. And if you see in the PYQs, you start doing PYQs. Don't wait until unless I'll upload those. आपके पास है ना PYQs? I'll try to upload complete chapter एक बार, so that answers के साथ neatly खत्म. As per topic wise, you try to finish. Okay. Monday I will give you chance to do the questions also. So this is 40 they given, this is 30, this is liquid design. Okay. He's saying to calculate the speed of light in the liquid of unknown refractive index. So refractive index is not known. And with the diagram area, this is what grazing over. This is 90. This is refractive liquid में ना speed of light in liquid चाहिए. मतलब V चाहिए. This angle is called what? The angle at which angle of refraction become 90. This is called as critical angle. This is C. This is also C. So पहले critical angle find करो. Sin C find करो. This is a right angle triangle. So 5/3. Refracting. Refractive index देखो. Sin C in this right angle triangle में sin C is equal to opposite by hypotenuse, right? So opposite is ये 50 right, ये वाला 50 right. So opposite by hypotenuse. कटा ले. 50 centimeters. So कितना होगा? 3/5. 3/5 is which angle? 3/5. 37 degrees, right? So you know 37 degrees. ठीक है, ऐसा नहीं तो 37 degrees sin C है. ठीक है, sin C is equal to कितना होगा? In terms of refractive index, 1 by mu, right? 1 by mu. Now find mu is equal to कितना होगा from this? Mu is equal to 5/2. Okay, refractive index is what? Of unknown liquid. आ गया ना? 5/3 मिल के. But speed of light कैसा आएगा? How much you got speed of light? 1.8 meter per second. 1.8 into कुछ है? 10 to 10 power 8. 10 power 8. No, you know already speed of light. C by V, right? So C is 3 into 10 power 8. 5/3 is equal to 3 into 10 power 8 by V. So V is equal to 9/5 into 10 power 8. So 5 1 5 4 5 8 4. So 1.8 into 10 power 8 meters per second. Okay. So अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे. मतलब I will give one ray, you have to complete the ray from the glass slab, and you should which direction the outside मतलब refraction होगा. It may be total internal reflection,
ऊपर जाएगा नीचे आएगा पता नहीं, उसके अकॉर्डिंगली वी हैव टू डू क्वेश्चंस।